Hello, my dear students. How are you? In chapter 6, this will be the last session, and today in this session, I have given you just exercise. I have tick marked some questions to write down in your homework. That is exercise in that question 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, and 12. So please do it perfectly, and these questions are very important for examination point of view. Otherwise, other questions are to be written, but these are the main ones. Then here in this slide, I have shown you some of the differences, and here it will include difference between collenchyma and sclerenchyma, then sieve cells and sieve tubes, tracheids and vessels, and lastly parenchyma and sclerenchyma. So some of the differences I have given over here. They are regarding 2 marks. Okay, now here the difference between heartwood and sapwood, then dicot and monocot root. So as such you have to copy down in your homework, because these points, they are very important to remember, and ready-made answers I have shown you here. Then this slide, it will show you the location or function of these terms like fascicular cambium, pericycle, Casparian strip, and so on. Now this slide will show you a transfer section of trunk of a tree shows concentric rings which are known as growth rings. How are these rings formed? What is the significance of these rings? So this question is regarding the secondary growth, and accordingly the age of a tree can also be calculated. So in diagrammatic form, the annual rings in old stem, it is in detail given. So you can refer this question accordingly. Okay, now this slide, it will show you the difference between lenticels and stomata. So lenticels, they are found in woody trees, and they are the opening. They are made due to loosening of epidermal and cortical tissues. But stomatas, they are specific structures which are located itself on epidermis, and particularly on the both the sides of epidermis, lower and upper epidermis of leaves. So in this way, this is the another question. What are the cells that make the leaves curl in plants during water stress? So this we have learned regarding monocot stem, and especially in grasses. So what are the functions of bulliform cells, how they look like, and how the curling of leaves that is possible, it is shown with the help of this diagram. Now in this page, I have shown you the difference between exarch condition and endarch condition of protoxylem. So these points are given. Similarly, the difference between stele and vascular bundle. The diagrammatic form is also shown. Even the difference between protoxylem and metaxylem, and lastly intrafascicular cambium and interfascicular cambium. Actually these diagrams are the डायरेक्ट पिक्चर विच आर टेकन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड. मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर से मैच करते हुए डायग्राम्स हैं. तो आपको ईच एंड एवरी क्लियर कट पोर्शंस, इसमें अलग अलग टिश्यूज़ आपको अच्छे से दिखेंगे. अब थोड़े से मैंने डायग्राम्स आपको यहाँ पे बताए हैं. ये डायग्राम आप पहचान लिया होगा, आपने नहीं पहचाना है तो मैं थोड़ा हिंट देती हूँ. यहाँ पे इंटर सेल्यूलर स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में, और सेल्स की साइज़ कैसी है, राउंड और ओवल और आइसोडायमेट्रिक. अब आप पहचानिए ये कौन सा टिश्यू है. आपको टिश्यू का नाम लिखना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. ये आपके लिए एक्सरसाइज है. इसी तरह से अब आपको ये डायग्राम आइडेंटिफाई करना है. इसमें आप देखिए किस पे आप फोकस करेंगे, थिकन्ड कॉर्नर्स. ये आपके लिए स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा. तो इससे आपको अंदाज़ लग गया होगा कि ये कौन सी तरह का टिश्यू है. तो इसका भी डायग्राम ड्रॉ करना है और सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है. और मेन इसका वर्ड है थिकन्ड कॉर्नर्स. आप बताइए कॉर्नर्स किसके थिकन्ड होते हैं, उसमें कौन सा डिपोजिशन होता है. नाउ दिस डायग्राम, इसमें तो नाम दिया हुआ ही है, अ फाइबर एंड अ स्क्लेरिड, बट स्टिल आई हैव शोन यू. इसको भी आपको पहचानना है. ट्रैकीड्स और वेसल्स किसके कंपोनेंट्स होते हैं आपको मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट इसमें सीव पोर्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स. इन्हीं 4 में आपको हिंट मिलेगा,
और इससे आपको आइडेंटिफाई करना है ईच एंड एवरी पार्ट, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके फंक्शंस को भी आपको लिखना है और डायग्राम सभी में ड्रॉ करना कंपलसरी है. ओके, दिस स्लाइड इट विल शो यू द डायग्राम ओनली. यहाँ पे सारे लेबल्स मैंने मैक्सिमम यहाँ पे हटा देने की कोशिश की है. तो जितने भी मार्किंग्स हैं, लाइनिंग्स हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है और उसके बारे में डिटेल भी आपको लिखनी है. सिमिलरली इन दिस डायग्राम ऑल्सो you have to identify it and you have to write down all the labels and their functions or the description regarding this diagram. तो ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी. आई थिंक यू विल एन्जॉय दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड लेट टू लेट यू हैव टू सबमिट दिस वर्क ऑन कमिंग वेंसडे एंड आई होप इसके पहले का वर्क भी आपका चल रहा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन गेट दी आंसर्स. सो टुडे वी आर एंडिंग आवर दिस चैप्टर नंबर 6 अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड in next session we will be starting with next chapter, but till then you have to complete this work. Okay, so take care. Bye bye students.